Mr. President, I will deliver a shortened statement and the full version would be submitted to the Secretariat for record. At the outset, we thank the co-facilitators, the PRs of Finland and Morocco for their valuable efforts in steering an extremely complex negotiation and for seeking to preserve consensus on an issue that must remain above politics. We acknowledge the role of all UN compact entities in supporting member states throughout this process. आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने अपना साफ और सख्त रुख रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ऐसा बयान दिया जो पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश था। बिना किसी देश का नाम लिए उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद को किसी भी बहाने, राजनीतिक फायदे या रणनीतिक जरूरत के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर दुनिया सच में आतंकवाद को खत्म करना चाहती है तो पहले आतंकवादी जैसी सोच छोड़नी होगी। पी हरीश ने कहा कि भारत पिछले कई दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है। हजार निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है और यही अनुभव भारत की जीरो टॉलरेंस यानी आतंकवाद के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने वाली नीति की सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की शिकायत, राजनीतिक कारण या रणनीतिक सोच आतंकवाद को सही ठहराने का आधार नहीं बन सकती। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 6 मुद्दों पर दुनिया का ध्यान खींचा। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में दोहरे मानदंड खत्म करने की भारत ने जरूरत बताई। इसके अलावा भारत ने आतंकवाद की फंडिंग रोकने और FATF के नियमों को सख्ती से लागू करने पर भी जोर दिया। देखिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा। Mr. President, I will deliver a shortened statement and the full version would be submitted to the Secretariat for record. At the outset, we thank the co-facilitators, the PRs of Finland and Morocco for their valuable efforts in steering an extremely complex negotiation and for seeking to preserve consensus on an issue that must remain above politics. We acknowledge the role of all UN compact entities in supporting member states throughout this process. India called for adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism a decade before GCTS was first adopted in 2006. The absence of a universally agreed legal framework continues to hobble collective action against terrorism. The time has come to demonstrate political will to conclude the CCIT. India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. Mr. President, India would like to underline 6 key priorities. First, the international community must reject double standards in countering terrorism. Second, countering terror financing and strengthening implementation of FATF standards is vital. Third, misuse of new and emerging technologies by terrorists demands urgent attention. It is disheartening that the 9th GCTS review has no acceptable landing point on such misuse, especially during the course of the last 3 years. Fourth, the victims of terrorism must get the dignity and rehabilitation that they deserve. Fifth, international cooperation and capacity building efforts must be aligned to the requirements of the benefiting country. And sixth, India condemns all acts motivated by prejudice or phobias directed against ethnicity, nationality, geography, faith, or race. As a multilateral forum of universal membership, the UN should not have a narrow lens. Mr. President, the Delhi Declaration on countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes has served global good, and 2 of its pillars have been implemented as the Abu Dhabi and Algeria guiding principles. The 9th review of the GCTS was held hostage to petty bean counting in our view and does not recognize the resultant global public good from these guiding principles. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives. We must address the conditions conducive to the spread of terrorism, yet never confuse context with justification. We must uphold human rights and rule of law, yet also recognize that the first human right is the right to life, and terrorism is the most direct assault on it. Mr. President, India is supportive of a more streamlined and precise GCTS with no redundancies and balance across its 4 pillars.
India works closely with UNOCT and other UN compact entities and financially contributes to capacity building. We stand ready to work with all member states so that the United Nations speaks with one voice against terrorism. अपने भाषण के आखिर में पी हरीश ने दोहराया कि दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवाद हर जगह शांति के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी सफल होगी जब दुनिया बिना किसी भेदभाव के हर आतंकवादी और उसके मददगार के खिलाफ समान कार्रवाई करेगी। सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आतंकवाद के योजनाकारों, फंडिंग करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों को कानून के कटघरे तक पहुंचाना ही पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।